घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एंजेला करवल जी जो है ऑन एयर होने वाली हैं इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंजेला जी, स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Rashmi, for inviting me to my Radio 580. Thank you so much. एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंजेला बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और हम जो है आपको बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि एंजेला करवल जी जो है अंबा ज्वेलर्स की ओनर हैं, जो कि मिलवुड्स टाउन सेंटर मॉल में स्थित है। राइट? Yes. Angela ji? You bet. So, सही बोला मैंने? Yeah, you said exactly the right thing. So we are located in Millwoods Town Center Mall, Amba Jewelers. Our customers are our guests. We focus in 22 karat gold. We guarantee the purity of our jewelry line. Oh, is that a tag? You bet. तो सबसे पहले एंजेला जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कुंदन ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। You bet. तो आप मुझे ये बताइए कि भाई कुंदन ज्वेलरी जो है हमेशा से इन फैशन रही है, हमेशा से बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है, और जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी दिखने में इतनी सुंदर होती है कुंदन के गहने, कुंदन की ज्वेलरी। सो बताइए कि अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्या है लेटेस्ट डिजाइन्स कुंदन के गहनों में? So Kundan jewelry, it's always in fashion. The good thing about Kundan jewelry, it matches with each outfit. It has like a nice crystal look with it, with the gold. It can match with like silver embroidery or gold embroidery, any type of color. It always has that classy look. जी. The one thing you do just want to be cautious about Kundan jewelry is, and we do like to tell our customers, is it's not fully in gold. So we get a lot of inquiries about that. So we do let them know that it's Kundan plus a mix of 22 karat gold. जी. Fashions around Kundan jewelry, chokers are really in fashion. Big chumke. Kundan jewelry can be a little bit heavy, so I do encourage individuals to either buy Kundan jewelry with a Sahara, so then they can have that support on their ears. And also many times when they buy the set, have it bedded in with daga, just so then they can place it appropriately. Sometimes the chain has some settings that it can't get to, but with a daga you can definitely get the fit and the look that you want of Kundan jewelry. So Kundan is always a hit. It never goes out of fashion. It is something that is that evergreen jewelry look. बिल्कुल बिल्कुल। और कुंदन की बात हो ही रही है तो और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है और हर औरत की पसंद है, और वो है हीरे। मैं डायमंड्स की बात कर रही हूँ। तो डायमंड्स के बारे में एंजेला जी आप हमें बताइए कि भाई हम असली हीरे को नकली हीरे से कैसे हम कर सकते हैं, कैसे परख कर सकते हैं असली हीरे की? Yeah, so one thing I will tell you about diamond jewelry is use your trusted jeweler. Amba Jeweler is very focused on our customer service, building that relationship with our customers. We want to be that long-time jeweler. So buying a diamond, you definitely want to purchase it from somebody that you trust, somebody that you have a long-term relationship with, somebody that you can just walk in, have that discussion if there's any issues, and making sure that you get the right appraisal papers and documents of when you are purchasing your diamond. So at Amba Jewelers, we focus mostly on custom design in diamond jewelry. You can reach out to us anytime. The one thing that we really focus on, everybody has their own criteria about the type of diamond that they're looking for, the type of cut, the clarity, their budget. So myself, I take the time to really understand, what is that couple looking for? What is that individual looking for? So that we can get them the right diamond, the right purchase, the right price point, and the right type of quality of products. With diamonds, there's such a variation in pricing. So you can start from like $1,000 to $20,000. It's really working with yourself and understanding your budget, your research. Designs are really important. You can go online, shop around. But again, Amba Jewelers is your one stop for that custom order and your diamond jewelry. We're here to definitely meet you on a price point. It's not about making money for us. It's really about building that customer relationship and that guarantee and satisfaction that this was the right purchase for me, and that I trust my local jeweler.
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट मेंशन किया है। और डेफिनेटली जब हमारे पास अपने खुद के लोकल ज्वेलर्स हैं तो हम क्यों बाहर मतलब इस जद्दोजहद में पड़े कि भाई हमें यहाँ से ढूंढना है वहाँ से ढूंढना है। अच्छा अंजिला जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, और वो बहुत ही एक ज़्यादा पर्टिनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं कहूँगी, क्योंकि हम अक्सर हमारे ओकेजन्स के टाइम, शादी ब्याह के टाइम और कोई भी बड़े त्योहार होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, तो हम कभी कभी पसंद करते हैं कि हम अपने गहने जो हैं इंडिया से मंगवाए किसी और से, है ना, या फिर हम खुद अगर जा रहे हैं तो लेके आए। तो आप हमें ये बताइए कि भाई असल में डिफरेंस क्या है इंडिया के गहनों में और यहाँ के जो गहने हैं या फिर डिजाइन्स है? तो कुछ रेट का डिफरेंस है या फिर डिजाइन्स का डिफरेंस है या ट्रेंड्स का डिफरेंस है कि यहाँ का ट्रेंड ज्यादा एडवांस्ड है, आगे चल रहा है, और द ट्रेंड इन इंडिया इज मोर ट्रेंडी, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्या डिफरेंस है? So, Amba Jewelers, we're very focused on a boutique look of our jewelry line. We're not like a massive big jeweler. We are really focused on customer service and picking out our designs and really understanding the Edmonton community and the type of jewelry and product line individuals want to wear. So that's the first thing I'm going to state is, you know, buy jewelry from your city, from your people. Because I am going to warn you, we do a lot of checking of India jewelry, and you know what? They're very good at plating the jewelry, stoning the jewelry. I'm not gonna lie, but many times we check the quality of the gold. We are seeing there's a lot of issues. At Amba Jewelers, we guarantee all our jewelry is certified, it's checked, it is actually brought over from Dubai and Singapore, it's certified. Those two governments have certified their jewelry, and they are assuring that the product is there and you're getting the true value for your money. So that's one warning point I'm going to give you is, yes, I love going to India. Everybody loves going to India. We love shopping. But I don't think jewelry is your best buy to purchase from India. क्यों? लेकिन आप ऐसा So first, the quality of the gold, we can't guarantee it. The other issue, if your jewelry damages or if it breaks, good luck trying to get that fixed here. If it's from our store, we definitely will provide that customer service. We have great exchange rates. We have good understanding of how to fix it. The other thing is, just the quality of gold of India is, you know, we find a lot of it tarnishes. A lot of it is black when we cut it or when you try to sell it back to us. We can't guarantee the purity of it. In Canada, all the jewelry is certified, especially at Amba Jewelers. It's checked. It's all from Dubai and Singapore. We guarantee that you're getting the top dollar for the gold that you're buying. Right. बहुत अच्छे से आपने फरमाया। और हमें आपके कुछ लेटेस्ट डिजाइन्स के बारे में बताइए अंजिला जी, क्या चल रहा है अभी आपके स्टोर में, क्या कलेक्शन है, एंड कुछ यंगस्टर्स के लिए खास मैं चाहती हूँ कि ऐसे किसी फोकस कुछ हम फोकस करें कि भाई यंगस्टर्स के लिए क्या है अभी आपके पास? So I'm born and raised in Edmonton. I really love the community and understanding what people like. I am a strong supporter of going real gold. I see that. I love that color. I feel like it looks, you know, very classy with our skin color, our hair color. It really stands out for us. So in fashion, we see there's a lot of going pure gold, 22 karat gold jewelry. We're also seeing a lot of stone jewelry that's in fashion right now. So gold jewelry with pearls or multicolor stones. The thing that is really in fashion is a mix of contemporary, so 22 karat gold jewelry, and over that there is a white gold polish or shine. It gives that really nice look that you can wear it with dresses, with pants, with suits. It's very elegant. So those are in fashion. You know, I encourage you to come into our store, walk in, see our designs, ask us questions. White stone jewelry is quite in fashion as well, which is focused on crystal in 22 karat, and again, the crystals that we bring in, it is cubic zirconium, but we use a high quality crystal. It's very similar to an American diamond, so it has a very good quality look. You're not paying for the amount that you pay for like a diamond jewelry. So we definitely want you to check that type of jewelry out as well. But
in my view, like if you're going for that traditional look, go 22 karat, that yellow look. It looks so pretty. Put up your makeup, red lipstick, you know, show who you are. And if you're looking for more like a contemporary, like a daily look, जी. a lot of white. We carry a lot of 22 karat gold, so you're still getting that investment on your gold jewelry. But जी. we do like a white shine on the gold. It does not come off. It's treated. And when you do sell the jewelry, a lot of us ask us questions. Well, when I sell this jewelry back, is there a cut? No, you get the full money of 22 karat gold. So my biggest advice to all of our customers, all of our community members is invest in jewelry and invest in gold, because just even in the last 18 months, जी. we have seen gold go up so much. Even by like $1,000, people have made money. This is an investment to them. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये मेंशन किया अंजुला जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझी करी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन चंद कुछ मिनटों में जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से अपनी तरफ से? Yeah, so my biggest thing to tell everybody in the community is we want to be your local jeweler. We want to be trusted. We want to build that relationship with you. We want you to be happy with your purchase and really get a good understanding about yourself. जी अंजुला जी, और मैं खासकर ये भी कहना चाहूंगी कि महामारी के दौरान जो मतलब इतना ज्यादा एक डिप सा आ गया था मार्केट में, बिजनेसेस में, तो उसके चलते तो डेफिनेटली हमारे अपने खुद के लोकल जितने भी बिजनेसेस हैं सपोर्ट करना और भी ज्यादा बनता है। Yeah, absolutely. You know, the more we support each other, the more that we'll grow as a community, giving back. You know, feel free anytime to reach out to me, any community events, any, you know, inquiries, advice. You know, I'm here to meet people, learn more about you, and definitely, build a safe community within Edmonton. एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच अंजुला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हम सबको मिली है, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी आपको सुन के जो है बहुत खुश हुए होंगे। इट्स बीन रियल प्लेजर टू हैव यू इनसाइड द स्टूडियो टुडे, और मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए प्रतिबंधों के हटते ही हम बहुत सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनको स्टूडियो में आमंत्रित कर पा रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर एंड मूविंग अहेड टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। और हम कॉन्वर्जेशन में थे एंजेला करवाल जी के साथ, जो कि अंबा ज्वेलर्स की ओनर हैं, एंड आप बिल्कुल जा सकते हैं, इनसे पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। मिलवुड्स टाउन सेंटर मॉल में इनका बुटीक स्थित है, तो बिल्कुल जाइएगा, आजमाइएगा एंड खुद परखिएगा एंड पहनिएगा भी। थैंक यू वेरी मच एंजेला।